Hello and assalamu alaikum everyone. This is your own teacher Zakir Rashid gives a very powerful, energetic, and a very warm welcome into another video session. St. Gregory's High School, and we are taking today's class of grade 9 Sam. And today's topic is, as you guys can see on your screens, written quite bold. This is kind of sentences, and with respect to their nature. In this video lecture, you're going to decipher a lot of things. You're going to know a lot of things. So stay tuned and be very focused. As it's written over here, so where to say what. In this video lecture, we are going to decipher where to say what and all that, like the nature of the sentences. But before going to that, first of all, the question that arises in our mind is, what is a sentence? Because if we are going to talk about kinds of sentences, if one do not know what is a sentence, how he or she will be able to grasp the kind of sentences. That's why I've added it here. And the definition of a sentence. A group of words that expresses a complete idea or thought is called a sentence. Like not only combination of words, but such combination of words which gives a complete idea and thought is called a sentence. Example, he bought a car. The above group of words expresses a complete idea. Such combination of words is called a sentence. Like that. If there is only combination of words, but the idea or the message has not been delivered, that will not be called, that cannot be called a sentence. Okay. तो यहाँ पर मैंने क्या बताया, मैंने बताया सिर्फ वर्ड्स को मिलाकर लिख देने से सेंटेंस नहीं बनता है स्टूडेंट्स, लेकिन एक कंप्लीट आइडिया और बात हमें समझ में आनी चाहिए. You will have an example, things to understand. Now look at another group of words. Book, read him. Have a very good look. The thing which is written in inverted commas and highlighted with the red color. Book, read him. This group of words does not make a complete sense, so it cannot be called a sentence. A sentence is a combination of words including a subject and a verb which express a complete idea. लेकिन यहाँ पे लिखा हुआ book, read him. It is not giving us the whole idea. Book is a word because it has a meaning. Is a word because it has a meaning. Read is a word because it has a meaning. And him is a word because it has a meaning. But all these combination of words cannot be called a sentence. Why? Because they are not giving us a complete sense. Sense, so it cannot be called a sentence. A sentence is a combination of words including a subject and a verb which express a complete idea. Sentence begins with a capital letter, ends with a period, question mark, or exclamation mark. Okay, there is some extra information about it. A sentence is a combination of words including a subject and a verb. There must be a subject and a verb in a sentence. Without a subject, we cannot call a combination of words a sentence. There must be a subject and a verb, okay, which express a complete idea. A sentence begins with a capital letter. We know that. We always start a fresh sentence with a capital letter and ends with a period, whether we stop it with a full stop, generally known as period, question mark, or exclamation mark. You know what is it? Okay, there are some examples of sentence to be and sentence not to be. He to school. This is a combination of word. He is a word, to is a word, in school. But this isn't a sentence. Why? Because it is not giving you a complete idea. He goes to school. Okay, that is giving you a complete idea. She's an. What she's an? मैं कहूँ वो है. She's eating an apple, like that. That is what she's eating, an apple. There was she is an an. She is an an was there over here as well in the first example, which is wrong. But it is not giving a complete idea. That's why we cannot call it a sentence. My name is what? If someone would ask, what's your name? I would say my name is. So is it a sentence if I replied it as my name is? Because until unless I won't tell my name, I will not. The person will not be able to understand it. That's what the thing is. My name is John. Okay. What are you? What are you doing? Who are you? What a beautiful flower, like that. And this is flower rather than calling it flower. Generally, students call it flower, which is a wrong pronunciation for the word. It is flower. Okay, I hope that I have given you a good idea about what is it.
A sentence is a combination of word which gives a complete idea or thought. Okay. Then I told you some things that it starts with a capital letter, ends up with a period, exclamation or question mark. And then I gave you some examples. I hope that you've gotten now. You have a very good idea now. That's what a sentence is. Let's move towards kinds of sentences with respect to nature of sentence. Like there are two kinds of sentences, one according to the structure and the other is according with respect to the nature of sentence. What is the purpose of studying this? The question must be rising in your mind, but as whenever we study anything, there is a purpose behind that. हम कुछ भी पढ़ते हैं इसके पीछे कोई ना कोई वजह होती है. इसके पीछे वजह क्या है? When you don't know the nature of sentences, the kind of sentences, you will not be able to communicate properly, whether in the form of speaking or whether in the form of writing. Because when you'll not be able to understand whether the person you're talking has asked you a question, given you an order, asked you for a suggestion or given you an advice like that. जब आपको पता ही नहीं होगा सामने वाले ने सवाल पूछा है, आपको मशवरा दिया है, आपसे मशवरा मांगा है, नसीहत की है, हुक्म दिया है, तो आप आंसर कैसे करेंगे? मिसाल के तौर पे यहाँ पे to learn the nature of sentences, हम क्यों पढ़ते हैं इसको? Nature of sentences को समझने के लिए, जैसे मैंने अभी आपको बताया, कोई मुझसे पूछता है, hey Azza, what's your name? I would say no. कोई मुझसे पूछता है, hey Azza, what's your name? Hey Azza, what you doing? I would say no. अजहर तुम क्या कर? मैं कहूँगा नहीं. ये तो कोई बात नहीं हो ना, नहीं, हाँ, ये मैं कहूँ हाँ. तो किसी सामने वाला ने मुझसे सवाल पूछा है, मैं उसके जवाब में हाँ या ना कहूँ. जवाब तो मैंने हाँ या ना में दिया है, लेकिन ये सामने वाले को बात समझ में नहीं आ रही. ठीक है, कोई मुझसे पूछता है, hey what's your name? मैं कहूँगा हाँ या ना. ठीक है, लेकिन मैं कोई मुझसे पूछता है, hey is your name Azhar? I would say yes, my name is Azhar, like that. Yes or no. If I would say yes or no over here, my answer will be correct. तो मुझे पता होना चाहिए सामने वाला सवाल पूछ रहा है तो सवाल कौन सी तरह का है, हाँ या ना में जवाब देने वाला है या पूरा जवाब देने वाला है. कोई मुझसे पूछ रहा है आपका नाम क्या है, तो मैं कहूँगा मेरा नाम अजहर है, जवाब मिल गया. लेकिन कोई मुझसे पूछे आपका नाम क्या है, मैं कहूँ हाँ या ना, तो बात समझ में नहीं आ रही. लेकिन कोई मुझसे पूछे क्या आपका नाम अजहर है, मैं कहूँगा जी, जी हाँ, जी नहीं, like that. So the difference is that like there are different kinds of sentences. मुख्तलिफ तरह के sentences होते हैं जिनकी नेचर को समझे बगैर आप properly communicate नहीं कर सकते. Like that. Let's take an instance. Example लेते हैं. Someone said to you, would you like to take some tea? And you will reply, wow. किसी ने आपसे क्या पूछा, क्या आप चाय लेना पसंद करेंगे? आप कहेंगे वाह. What is that? Like the person won't be able to understand it. Why? Because the thing you've said is totally out of the senses. Okay, according to the nature of sentence, there are 5 kinds of sentences which are as follows. With respect to the nature of sentences, you'll find different things in different books. Generally, there are 4 kinds of sentences because optative and exclamatory are both combined together. Generally, जो आपको kinds of sentences मिलेंगे, even when you'll Google it, you'll find only 4 kinds of sentences. But to give you more brief idea about, वैसे तो 6 भी हैं, 7 kinds of sentences भी हैं, but they have nothing to do with the writing and reading. They have things to do with the speaking and listening. So it's about the stress. So that's why I haven't included that. I have only given you 5 kinds of sentences over here. Okay, assertive or declarative sentences. The second one is interrogative sentences. Okay, we call it assertive or declarative. So we will call it assertive sentences, interrogative sentences, imperative sentences, exclamatory sentences. And the last one is optative sentences. Assertive or declarative sentences. A sentence that makes a statement or assertion is called an assertive or declarative sentence. Declarative sentences are used to convey information. Assertive sentences ends with a period. Generally क्या बताया गया है, a sentence that makes a statement. जिस भी sentence में आप simple सी statement देंगे, यानी कोई भी सादा सी बात कहते हैं, ठीक है, या assertion करते हैं या declare करते हैं, declaration होती है, तो ये क्या कहलाते हैं? Declarative या assertive sentence. क्योंकि assertion होती है इसलिए assertive, declare करते हैं इसलिए declarative sentences कहलाते हैं. मतलब यहाँ देखें, और ये बताया जा रहा है कि end कैसे होता है, ये end होता है full stop पे. तो ये बात यकीन आपको समझ आ गई होगी. मिसाल के तौर पे किसी ने मुझसे पूछा व्हाट्स योर नेम, तो ये सवाल है, मैं उसका जवाब दूंगा माय नेम इज अजहर. तो मैंने क्या किया, सिंपल स्टेटमेंट दिया, मैंने कहा मेरा नाम अजहर है.
अब मेरा नाम अजहर ये जो जुमला है, इस जुमले में ना तो कोई हुक्म दे रहा हूं मैं, ना कोई रिक्वेस्ट कर रहा हूं मैं, ना ही मैंने कोई दुआ दी है, ना कोई बद्दुआ दी है, ना ही मैंने कोई मशवरा दिया है, ना ही मैंने कोई सवाल पूछा, मैंने बस सीधी सी बात कह दी है, मेरा नाम अजहर है, ठीक, माय नेम इज अजहर, लाइक दैट, सो दैट्स अ वेरी सिंपल एंड फ्लैट स्टेटमेंट। तो ऐसे सिंपल स्टेटमेंट वाले सेंटेंसेस को हम असर्टिव या डिक्लेरेटिव सेंटेंस कहते हैं। They, which are assertive sentences, can be further divided into two types: affirmative, generally known as positive, and the other one is negative. याद रखिएगा, जनरली स्टूडेंट्स मेक अ मिस्टेक और दे आर कंफ्यूज अ लॉट अबाउट इन बिटवीन अफर्मेटिव एंड असर्टिव। देखिए, असर्टिव टाइप है, उस असर्टिव जो हमारे पास है, मेन काइंड ऑफ सेंटेंस है, उसकी टाइप हमारे पास क्या है, अफर्मेटिव। असर्टिव हमारे पास फर्स्ट काइंड ऑफ सेंटेंस है, जिनकी फर्दर डिवीजन में हमारे पास क्या है, अफर्मेटिव है। मिसाल के तौर पे केमिस्ट्री मेन हमारे पास क्या है, आप कह सकते हैं टॉपिक है, और उसका सब टॉपिक क्या है, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। तो केमिस्ट्री तो दोनों में ही आ रहा है, ऑर्गेनिक में भी आ रहा है, इनऑर्गेनिक में भी आ रहा है, लेकिन मेन जो हमारा टॉपिक है वो क्या है, असर्टिव। बिल्कुल वैसे ही असर्टिव और डिक्लेरेटिव सेंटेंस हमारे पास फर्स्ट टाइप ऑफ सेंटेंस है, और आप कह सकते हैं कि इसमें जो पहली आप कह सकते हैं टाइप है फर्स्ट काइंड में, यानी दो इसको हिस्सों में डिवाइड किया गया, अफर्मेटिव एंड नेगेटिव। अब देखें यहाँ पे एग्जांपल्स हैं अफर्मेटिव सेंटेंसेस। Affirmative sentences are those sentences which have positive statements or information. Examples: he goes to school, he likes to play chess, they are singing a song, like that. तो sentences जिनमें हम simple statement तो देते हैं, लेकिन वो पॉजिटिव हो। मिसाल के तौर पे मुझसे किसी ने पूछा क्या आपका नाम अजहर है, मैं कहूंगा जी नहीं, मेरा नाम अजहर नहीं है, लाइक दैट। तो यहाँ पे मैंने नहीं कहा ना, तो ये नेगेटिव हो गया, पॉजिटिव नहीं रहा। लेकिन मैं कहूँ जी हाँ मेरा नाम अजहर है, तो जहां पे भी नेगेटिविटी आ जाती है, नेगेटिव एलिमेंट आ जाता है, नो का एलिमेंट आ जाता है, वो सेंटेंस ऑटोमेटिकली नेगेटिव हो जाता है। वी आर टॉकिंग अबाउट पॉजिटिव सेंटेंस, ठीक है। Affirmative sentences are those sentences which have positive statements or information. Examples: he goes to school, he likes to play chess, and they are singing a song, as I told you. Negative sentences. Negative sentences are those sentences which have negative statements or information. हैं दोनों ही simple statements, जिसमें बात सीधी की जा रही है, पॉजिटिव की जा रही है, वो पॉजिटिव है। जिसमें नो का एलिमेंट आ रहा है, नॉट का एलिमेंट आ रहा है, वो नेगेटिव हो जाता है। He does not go to school. He does not like to play chess. They're not singing a song, like that. Interrogative sentences. A sentence that asks a question is called an interrogative sentence. Interrogative sentence ends with question mark. I hope that you all have gotten it. He does not go to school. He does not like to play chess, and they are not singing a song. Interrogative sentences. A sentence that asks a question is called an interrogative sentence. Interrogative sentences. Interrogative sentence ends with question mark. ठीक है, क्या बताया जा रहा है? A sentence that asks a question. हर वो sentence जिसमें सवाल पूछा जाए उसे हम interrogative sentence बोलते हैं। सिंपल है, ठीक है। और बताया जा रहा है, एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन दी गई है कि interrogative sentences के एंड में क्या आता है, ये question mark आता है, लाजमी है। It is a compulsory mandatory thing. There are two types of interrogatives. जैसे हमने assertive की दो टाइप्स पढ़ी, interrogative की भी दो टाइप्स हैं, alternative interrogatives and WH interrogatives. What are alternative interrogatives? Alternative interrogatives offer two or more alternative responses. Alternative interrogatives क्या होते हैं, जिनमें हमें एक से ज्यादा responses में हमें आंसर करना होता है, like something close-ended. Examples: should I telephone you or send an email? Do you want tea, coffee, or espresso? Should I telephone you or send an email? देखिए यहाँ पे क्वेश्चन है, should I telephone you or send an email? क्या मैं आपको टेलीफोन करूँ या ईमेल भेजूं? दो ऑप्शंस हैं, मैं कहूँगा you should telephone me or you should send me an email. I cannot answer except these two. इसके अलावा मैं कोई जवाब नहीं दे सकता। Do you want tea, coffee, or espresso? I would like to have tea, or I would say I would like to have coffee. I would like to have espresso, like that. So that's what, there are two or more responses. They're also called yes or no questions. Why? Because the answers generally are given in yes or no, like that. इनका जवाब जनरली क्या होता है, yes या no में दिया जाता है, जब इन्हें yes no questions भी कहा जाता है। और आगे इसमें क्या लिखा हुआ है, आगे इसमें लिखा हुआ है कि इन्हें क्लोज एंडेड भी कहा जाता है। क्लोज एंडेड क्यों कहा जाता है? क्योंकि इसमें आप कोई और अपनी मर्जी का जवाब नहीं दे सकते। आपको जवाब क्या देना है, आपको जवाब वही देना है जो उसमें ऑप्शन दी गई है। मिसाल के तौर पे मैंने अभी भी आपको एग्जांपल दी थी ना कि hey, are you Azhar? So I would say yes, I am Azhar. No, I'm not. तो मैंने yes या no में जवाब दिया। And one thing I would like to elaborate over here really well, that generally एक perspective wrong ये पाया जाता है कि हमारे यहाँ पे जब आंसर किसी से कोई क्वेश्चन पूछा जाए,
do you play cricket, तो हम आंसर करते हैं yes or no, which is the wrong thing. The right, the best, the right and the formal way to answer a question is to. Okay, so I was saying that the correct and formal way is to answer like that. Yes, I do play cricket. No, I do not play cricket. Rather than only calling yes or no. The best way to answer is yes, I do, no, I do not, like that. So they are known as yes no questions because the responses are yes or no. Close-ended because you cannot answer more than what you've been given the choices in. यानी आपको yes no questions क्यों कहा जाता है? क्योंकि आपको वही जवाब देना है जो सवाल में पूछा गया है. आप उसके अलावा कोई जवाब नहीं दे सकते. Confirmative इसलिए कहा जाता है, इसमें आप confirm करते हैं. Like, hey, are you a Pakistani? You would say yes, I am a Pakistani. No, I'm not. लेकिन मैं आपसे पूछूं, what's your country? So you would say, my country is Pakistan. आपके पास कोई भी जवाब हो सकता है, लेकिन जब आप यहाँ पे yes या no में जवाब देते हैं, या आपके पास कंफर्मेशन होती है किसी चीज की, जैसे आप कभी भी कोई पैकेज करते होंगे मोबाइल फोन पे, तो आपके पास एक कंफर्मेटिव क्वेश्चन आता है कि आप कंफर्म करते हैं whether you want to have this package or not, like that. तो कंफर्मेशन का मतलब होता है तस्दीक करना. किसी चीज के बारे में इंफॉर्मेशन होती है आपके पास और आप जाकर उस बात को क्या करते हैं, आप तस्दीक करवाते हैं, उस चीज की कंफर्मेशन करवाते हैं कि आया ऐसी चीज है या नहीं है. मिसाल के तौर पे आप किसी का घर ढूंढ रहे हैं, ठीक है, और आप मिसाल के तौर पे आई एम फाइंडिंग द होम ऑफ खिजर जमील. I had no idea about, I had a slightest idea about the street, but I had no idea about the house or the bungalow actually. So I would go and knock the door. I would say press a doorbell, and when someone would come out, I would say, is this the home of Khizr? Because I had an idea. So that's what they'll say, yes, this is the home of Khizr if it is, or they would say no, it's not Khizr's home. Khizr's home is right there next to us, like that. So that's what it is. ये बात यकीनन आपको यहाँ तक समझ में आ गई होगी कि मैंने बताया क्वेश्चंस क्या होते हैं, इंटरोगेटिव्स क्या होते हैं. वो सेंटेंसेस होते हैं जिनमें क्वेश्चन किया जाता है. फिर मैंने बताया कि उसके एंड में हमेशा क्वेश्चन मार्क आता है. फिर मैंने आपको बताया कि क्वेश्चंस भी दो तरह के होते हैं. एक कहलाते हैं ऑल्टरनेटिव इंटरोगेटिव्स, या जिन्हें आप क्या कहते हैं, क्लोज एंडेड कहते हैं, या यस नो क्वेश्चंस कहते हैं. और दूसरा कहलाता है WH क्वेश्चन, जिसे हम ओपन एंडेड या WH क्वेश्चंस कहते हैं. ठीक है, आई होप कि आपको बात समझ में आ गई होगी, जिसमें हम मुख्तलिफ रिस्पॉन्सेस पे जवाब देते हैं, जिसमें हम किसी चीज की तस्दीक करते हैं, कंफर्म करते हैं किसी चीज को, यस या नो में आंसर करते हैं. ठीक है, और उसका आंसर हमेशा क्लोज एंडेड होता है. उसके बाद हम आते हैं किस पे, लेट्स मूव टुवर्ड्स द WH interrogatives. What is the WH interrogatives? WH interrogatives, on the other hand, are introduced by a WH word and they elicit an open-ended responses. ठीक है, क्या बताया जा रहा है, WH interrogatives जो होते हैं वो ऐसे interrogatives होते हैं बच्चों के जो WH से शुरू होते हैं और इनका रिस्पॉन्स ओपन एंडेड होता है. मिसाल के तौर पे आप किसी से जाकर पूछते हैं, hey, what do you do? तो इसका आंसर सामने वाला कुछ भी दे सकता है. I do job, I do study, I'm a school student, I don't want to answer you, why are you asking like that? लेकिन आप इससे पूछें, hey, are you a school student? Someone would say, yes, I'm a school student. No, I'm not a school student. तो सामने वाले के पास दूसरे वाले में, नहीं, क्या आप स्कूल में पढ़ते हैं, तो जवाब क्या होगा, हाँ मैं पढ़ता हूँ, नहीं मैं नहीं पढ़ता. लेकिन अगर आप किसी से पूछते हैं, यार आप क्या करते हैं, तो सामने वाला कोई भी जवाब दे सकता है. तो रिस्पॉन्स जो है वो ओपन है, इसीलिए इसको ओपन एंडेड कहा जाता है. They're also called open-ended or informative interrogatives. इनमें इंफॉर्मेशन मिलती है. इससे पिछले वाले में हमें कंफर्मेशन मिलती थी कि ऐसा है या नहीं है. मिसाल के तौर पे, क्या ये गुलशन इकबाल है, मैं कहूँगा हाँ है, नहीं ये नहीं है, लाइक दैट. लेकिन इंफॉर्मेटिव में होता है ये कौन सी जगह है, तो मैं आपको इंफॉर्मेशन दूंगा कि ये गुलशन इकबाल है. दिस इज गुलशन इकबाल. व्हाट्स द प्लेस, what's this place all about? This is Gulshan Iqbal, block 4, like that. Examples: what happened, where do you work, who won the cup final in 1992, like that. What happened, where do you work, and who won the final cup in 1992, like that. I hope that you've gotten it now. WH और आपके पास alternative interrogatives के difference आपको अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा. अब बढ़ते हैं अपनी अगले टॉपिक की तरफ, that is not अगले टॉपिक, अगले kind की तरफ, that is imperative sentences. Imperative sentences हम बहुत अच्छी तरह से जानते हैं क्या होते हैं. A sentence that expresses a request, command, suggestion, and advice, etc. is called an imperative sentence. And I spoke it as suggestion rather than calling it suggestion.
A sentence that expresses a request, command, suggestion, and advice, etc. is called an imperative sentence. And ऐसे जुमले जिनमें हम request करते हैं, कोई command यानी हुक्म देते हैं, suggestion यानी मशवरा देते हैं, advice यानी नसीहत देते हैं, इस तरह के जितने भी जुमले होते हैं, इन्हें हम imperative sentences कहते हैं. देखें, अगर मैं किसी से कहूँ यार अपनी तबीयत का ख्याल रखें, मौसम तब्दील हो रहा है, ये मैंने नसीहत की, मैंने सवाल नहीं पूछा, मैंने सिंपल स्टेटमेंट नहीं दी है, मैंने क्या किया है, do take care of your health because the weather is changing, like that. Examples are open the door, order. Obviously ये बहुत ही common सा sentence है, लेकिन हर order को हम request में कैसे change कर सकते हैं, please या kindly add करके. लेकिन मैं इसको इसी sentence को अगर मैं इस तरह से कहूँ, please open the door, that will be order. If I would say please or kindly open the door, so this order would become the request. If I'm saying something to my youngers, I could say, I could give them orders, but when it comes to talk about the elders, I cannot say that. I have to be very polite, and I would have to request rather than saying them or giving them orders. Like open the door is an order, but if I would say please open the door or kindly open the door, it is requested to open the door, that will become a request. Take care of yourself, it's an advice. Okay, let me tell you a difference over here between ADVICE, advice, and ADVISE, advise. ADVIC is a noun which means the given verdicts, जिसे हम उर्दू में बोलते हैं नसीहत. And ADVISE is actually a verb which means to advise. ठीक है, यानी कि किसी को क्या करना, आप किसी को जब नसीहत करते हैं तो हम क्या करते हैं, advise, SE आता है, verb है, लेकिन ADVICE noun है. ठीक है, like मैं sentence कह रहा हूँ, अच्छी तरह से समझिएगा इसको. I have advised him an advice. I have advised him an advice. मैंने उसे एक नसीहत कर दी है. Advised ये verb आ गया, verb की third form. I have advised. और an advice, CE आ रहा है, cat वाला C, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये noun है. Please open the door, that is a request. ठीक है, मैंने अभी आपको बताया, Apple is better than Samsung. Let's suppose you are going to buy a new phone, as you want to upgrade your smartphone, and you came to me. Considering that I have a very good knowledge of smartphones, so you ask me, hey Azza, I have this much range, like I have 80,000 rupees, okay, and I'm thinking to take a smartphone. Which phone would you refer me? I would say the best two are iOS and Android. And in Android, Samsung is the best, and in iOS there is nothing but Apple. So Apple is better than Samsung if you want to have it. Have a new smartphone, have a new experience, enhance your range, and buy an Apple, because Apple is better than Samsung. And this is not Apple that we eat. I'm talking about Apple Macintosh Apple, okay? Then we have exclamatory sentences. What are exclamatory sentences? A sentence that expresses strong feelings or emotions is called an exclamatory sentence. These sentences express surprise, joy, sorrow, appreciation, love, excitement, frustration, anger, etc. यानी वो sentences जिनमें हम certain feelings या emotions का क्या करते हैं, certain feelings, strong feelings और emotions को express करते हैं, इन्हें exclamatory sentence कहलाता है. ये exclamatory sentences कहलाते हैं, इन्हें exclamatory sentences कहते हैं. आप express से exclamatory consider कर सकते हैं, ठीक है? Like it would be like आप इससे अंदाजा लगा सकते हैं ना, like मुझे चोट लग जाती है तो मैं कहूँगा ouch. अच्छा, ये वेरी करते हैं, ये किसी का कोई भी कह सकते हैं रिएक्शन हो सकता है, लेकिन स्ट्रॉन्ग फीलिंग, स्ट्रॉन्ग इमोशंस की जहां बात आती है, वो सेंटेंस एक्सक्लेमेटरी बन जाता है. ठीक है, और आगे क्या लिखा हुआ है, mark of exclamation, that is written next to it, that is the opposite eye, or you would say totally 180 degree eye, comes in exclamatory sentence. It is always added after the feeling or emotions in a sentence. Fine. So mark of exclamation comes in exclamatory sentences. It is always added after the feeling or emotions in a sentence. Okay. So that's what it is. I told you that those sentences in which we express some sort of strong feelings or emotions, those are known as exclamatory sentences. And I told you that an exclamatory the exclamation mark comes in exclamatory sentences. It could come in the midst, or it could come at the start, as I've given examples over here. It is always added after the feeling or emotions in a sentence.
जहां कहीं भी आप स्ट्रॉन्ग फीलिंग या इमोशन ऐड करते हैं ना, वहां पे जैसे कि आप कोई भी इंटरजेक्शन ऐड करते हैं, उप्स, आउच, वाओ, वहां पे आप क्या करते हैं, उसके फौरन बाद ही आप एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस लगाते हैं, जिससे समझ आ जाता है कि ये सेंटेंस क्या है, एक्सक्लेमेटरी है। व्हाट अ ब्यूटीफुल फ्लावर इट इज, वाह क्या खूबसूरत तस्वीर। अब देखें, मैं इसको दोनों तरह से कह सकता हूँ, व्हाट अ ब्यूटीफुल फ्लावर। अब क्वेश्चन मार्क आगे लगा दूंगा तो ये क्वेश्चन हो जाएगा, लेकिन एक्सक्लेमेशन मार्क आगे लगाऊंगा तो ये एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस हो जाएगा। व्हाट अ ब्यूटीफुल फ्लावर इट इज, लाइक दैट। हाउ नाइसली she's singing, like that, that is fantastic। अब देखें, W और H से शुरू होने वाला लाजमी नहीं है हर सेंटेंस क्वेश्चन हो। अगर उसमें एक्सक्लेमेशन मार्क लग जाएगा तो एक्सक्लेमेशन होगा, और अगर उसमें क्वेश्चन मार्क लग जाएगा तो वो क्वेश्चन होगा। इस वजह से हर क्वेश्चन वाले सेंटेंस में, इंटरोगेटिव सेंटेंस में क्वेश्चन मार्क लगाना लाजमी होता है। That is fantastic। Someone said that, hey, do you know that you won the lottery? I would say, wow, that's fantastic, hurrah, we won the match, like that। That's what it is, the perspective। You could see over here that after hurrah, I've added this exclamation mark, and in rest of the sentence, all else sentences, I've added this in the end of that. So I could do, if I want to add over here, I could add over here. I've added it twice. This could be done as well. Optative sentences. Optative sentence. A sentence that expresses some sort of prayer, desire, or wish is called an optative sentence. Examples. ऐसे सेंटेंसेस जिनमें हम प्रे या डिजायर या विश की बात करते हैं, वो ऑप्टेटिव सेंटेंसेस कहलाते हैं। जिसमें हम मिसाल के तौर पे किसी को दुआ देते हैं, किसी ख्वाहिश का इजहार करते हैं, वो कहलाते हैं ऑप्टेटिव सेंटेंस। एग्जांपल, मे लिव लॉन्ग एंड हेल्दी लाइफ, आप लंबी और सेहतमंद जिंदगी जिए। ये देखें, ये कोई सवाल नहीं है, ये कोई रिक्वेस्ट नहीं है, ये कोई ऑर्डर नहीं है, ये कोई एडवाइस नहीं है, ठीक है। ये सिंपल स्टेटमेंट नहीं है। इसमें हम देखें, मे से स्टार्ट कर रहे हैं सेंटेंस, और अगर आप इस चीज को समझने की कोशिश करें तो इसका जो थीम है, मेन नेचर है, वो क्या है, ये दुआ है। He wants to be the best amongst all pupils। इसमें विश या डिजायर है। He wants to be the best amongst all pupils। वो तमाम में सबसे अच्छा बनना चाहता है, ये उसकी डिजायर है, ये उसकी विश है। She has desired to go to Connecticut this year। ठीक है, उसने जो है वो कनेक्टिकट, इस साल कनेक्टिकट जाने की ख्वाहिश का इजहार किया है। May you accomplish your goals, दुआ दी गई है ना, may you accomplish your goals, आप अपनी आपकी मुरादें पूरी हों या आप अपने मकासद को हासिल कर पाएं, like that। So let's have a brief review about what we've done। We've talked about affirmative sentences। affirmative sentences क्या होते हैं, मैं आपको जल्दी से उर्दू में रिव्यू दे देता हूँ। मैंने बताया अकॉर्डिंग टू द नेचर ऑफ सेंटेंसेस 5 काइंड ऑफ सेंटेंसेस होती हैं। पहली काइंड ऑफ सेंटेंस है असर्टिव। असर्टिव का मतलब होता है सिंपल स्टेटमेंट। अब आप आके जब आपने पढ़ा एडवाइस, सजेशन, ऑर्डर, तो देखिए ये बिल्कुल सिंपल स्टेटमेंट है, ना कोई सवाल है, ना कोई ऑर्डर है, ना रिक्वेस्ट है, ना सजेशन है, ना प्रे है, ना विश है, ना कोई सडन फीलिंग या इमोशन है। ये सिंपल से एक सेंटेंस होता है। ये पॉजिटिव हो, अच्छा, इसको भी फर्दर डिवाइड किया गया 2 हिस्सों में। एक अगर सिंपल और पॉजिटिव है तो ये क्या हो जाएगा, इसको हम असर्टिव कहते हैं। सॉरी, सिंपल और पॉजिटिव तो इसे हम अफर्मेटिव कहते हैं, ठीक है। और अगर ये आप कह सकते हैं कि इसमें नॉट या नो का आप कह सकते हैं एलिमेंट आ रहा हो, तो हम इसे क्या कहते हैं, नेगेटिव कहते हैं। उसके बाद मैंने आपको बताया कि नेगेटिव सेंटेंस क्या होता है। देखिए, हमने यहाँ पे यही बात की है कि नेगेटिव सेंटेंसेस क्या होते हैं, अभी अभी बताया मैंने आपको। इन सिंपल असर्टिव सिंपल स्टेटमेंट्स को बोलते हैं। उसकी 2 टाइप्स हैं। पहली टाइप अफर्मेटिव है, दूसरी टाइप नेगेटिव है। अफर्मेटिव में हम पॉजिटिव स्टेटमेंट्स की बात करते हैं, पॉजिटिव सिंपल स्टेटमेंट्स की, और नेगेटिव में हम नेगेटिव सिंपल स्टेटमेंट्स की बात करते हैं। इंटरोगेटिव मैंने आपको बताया हर वो जुमला जिसमें सवाल पूछा जाए, कुछ पूछा जाए, वो सवालिया जुमला या इंटरोगेटिव सेंटेंस कहलाता है। उसके आखिर में सवालिया निशान आना लाजमी है। इसको भी 2 तरह के क्वेश्चंस में डिवाइड किया गया है, अल्टरनेटिव इंटरोगेटिव्स, या इन्हें हम क्या कहते हैं, क्लोज एंडेड, या फिर कंफर्मेटिव क्वेश्चंस, या फिर इसके साथ साथ हम इन्हें क्या कहते हैं, यस नो क्वेश्चंस भी कहते हैं, क्योंकि इनका आंसर या तो यस नो में देते हैं हम, या जो रिस्पॉन्सेज होते हैं उसी में हम जवाब देते हैं। और क्योंकि इसमें कोई और जवाब नहीं दे सकते, इसलिए इसको क्लोज एंडेड कहते हैं। और इसमें क्योंकि हम कंफर्म करते हैं चीजें, इसलिए इसे कंफर्मेटिव कहते हैं। WH में मैंने आपको बताया कि WH वो क्वेश्चंस होते हैं जिनमें आप सामने वाले को कोई भी रिस्पांस दे सकते हैं, या सामने वाला आपको कोई भी रिस्पांस दे सकता है। इसलिए क्योंकि इसके रिस्पांसेस ओपन होते हैं, कोई भी जवाब दिया जा सकता है, इसलिए इसे ओपन एंडेड कहा जाता है। अच्छा, ये WH से स्टार्ट होते हैं, फिर मैंने यहाँ पे आपको एग्जाम्पल्स दे दी हैं, ठीक है। इंपेरेटिव में मैंने आपको बताया ऑर्डर, एडवाइस, रिक्वेस्ट, सजेशन, और भी चीजें आ सकती हैं इसमें, एडवाइस है, एटसेट्रा है, ठीक है। तो ये तमाम चीजें क्या कहलाती हैं, इंपेरेटिव सेंटेंसेस कहलाते हैं। एग्जांपल मैंने आपको दी कि ऑर्डर क्या होता है। अच्छा, जनरली इनमें सब्जेक्ट नहीं होता शुरू में, और ये स्टार्ट होते हैं वर्ब से। ओपन द डोर, ओपन क्या है, लाइक ओपन द डोर, ये क्या है हमारे पास, वर्ब है। टेक केयर, तो ये भी क्या है, वर्ब है, ठीक है। प्लीज ओपन द डोर, तो प्लीज आ गया इसमें, ये रिक्वेस्ट के लिए, एप्पल इज बेटर देन सैमसंग, लाइक दैट।
सब्जेक्ट इसमें आपको कहीं पे भी नजर नहीं आ रहा होगा। एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस मैंने अभी थोड़ी देर पहले आपको बताया कि वो सेंटेंसेस जिनमें हम सडन फीलिंग या स्ट्रॉन्ग फीलिंग इमोशंस को एक्सप्रेस करते हैं, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस कहलाते हैं। ठीक है, कि ये सेंटेंसेस जो होते हैं ये सरप्राइज के हो सकते हैं, जॉय के हो सकते हैं, सॉरो, अप्रिशिएशन, लव, एक्साइटमेंट, फ्रस्ट्रेशन, एंगर एटसेट्रा। ये जो इमोशन है आपकी या फीलिंग है वो कोई भी हो सकती है। आपको गुस्सा आ रहा है या बहुत ज्यादा आप गुस्सा करते हैं ना, बाह, like that you would say be off, किसी को आप भगाते हैं, wow, beautiful, sweet, cute, like that, whatever you say। मैंने आपके नीचे एग्जांपल्स इसकी दी। ऑप्टेटिव में मैंने आपको बताया विश या डिजायर, या साथ ही साथ आप किसी तरह के प्रे की बात अगर करते हैं तो ये क्या होता है, ये हमेशा ऑप्टेटिव सेंटेंस का हिस्सा होता है। ठीक है, कर्सेस भी ऑप्टेटिव में आ जाते हैं, ये बददुआएं जो होती है ना, इस तरीके से, like that। So I hope that you all have gotten। Now I'm gonna unmute you all if you want to ask many questions, it's up to you।